My name is Anamika Joshi and I'm a Hindi spoken word artist. I write Hindi poetry, storytelling. I have a YouTube channel by the name of Batto ki Bakwas. Batto is my pet name and that's the name I use to narrate, perform on my poetry channel and on platforms. Yeah. I used to write those notebook ke piche wale poems, during my school days. But then professionally, or you can say that, as a continuously, regularly, I started writing from 2019. That was when I wrote my first poem, which got some recognition, and then I continued my journey from there. So Batto was my pet name, and there was this interesting thing where I didn't like my parents calling me Batto because I used to think that it's a very weird, unusual name to have a pet name of that kind. तो मैं क्या है अपने मम्मी पापा भैया दीदी और बाकी सबको भी बोलती थी कि बाहर कभी मुझे बत्तो मत बुलाना. तो आई यूज्ड टू टेल देम व्हाट दे कैन कॉल मी, क्या ना अनु बुला लेना या ऐसे बुला लेना, बड़ा बत्तो मत बुलाना. But a strange thing happened where we were in a market and my mother called me like Anu, and I was like कि किसको बुला रहे? I didn't found familiarity in that name. It was very weird. Then I realized that I love the name Batto somewhere, and it has this homely feel to it because it's been years that they have been calling me that. Everyone knew me as Anamika Joshi. And when this poetry thing happened, and I was supposed to create a channel and put it out there, my poetry and everything, I went with this name because by that time I had actually become kind of a person who was comfortable with a lot of things that I was not comfortable before. So Batto was one of those things, and I used to tell people, Batto is my name, and I had become comfortable. So I thought, let me just be more comfortable with this name and carry this forward in my fresh journey that I'm starting from here as a poetry person. And that's when Batto was born. Thought about having a pet name or something. It was just that I didn't want to use my Anamika as my, name as a poet or as a performer. I really like this Sampat Saral ka Saral word, because Saral is something that I relate with. I write in a very conversational language. So Saral is something I relate with. But then I kept thinking what it could be, because we were discussing this a few days ago. So I will use something like Aakhir, because Aakhir is kind of it has two meanings. Aakhir is also Aakhiri wala Aakhir. And something like one of the pieces that people loved was Aakhir tum hote kaun ho. So it's a beginning of a question as well. So maybe it would have been, but I'm not sure. I would continue with Batto for a long time, and I may not have any other pet name. Many poets that are really beautiful, but Ashok Chakradhar is one poet that I relate with the most. I relate with his thought process, the way he very lightly in a very simplistic manner वो जो जिस तरीके से अपनी बात कहते हैं, जिस रिदम में अपनी बात कह जाते हैं, उसमें स्टोरी भी होती है, उसमें एक बैकग्राउंड मेटाफर भी चल रहा होता है उनकी बातों में. So I really love Ashok Chakradhar's pieces. From my poems, it's very difficult to choose. So I love आखिर तुम होते कौन हो, because I somewhere feel that मैंने ना कई बार आप सोच के लिखते हो ना कि हाँ इस पे लिखना है करके, ऐसे एक दो poems हैं जो मैंने सोच के लिखी है, तो मुझे उसमें मजा नहीं आता है. मुझे वहाँ पर अच्छा लगता है जहाँ पर ऑलरेडी दिमाग में इतना चल रहा था कि जब पोएम लिखने बैठी तो टक 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 पूरी पोएम लिखकर पन्ने पर उतर आई, एंड देन आप देख के सोच रहे हो कि ओके ये थॉट कहाँ से आ रहा था एंड हाउ इट फ्लो फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू एंड लाइन. तो इसलिए मुझे आखिर तुम होते कौन बहुत पसंद है. दिस वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट. आई डोंट नो इफ इट्स फनी और नॉट. सो दिस इज अबाउट माय फर्स्ट पोएम, माँ तुम भी गलत हो सकती हो. So what happened was that this was the first ever poem I wrote I wrote and performed. This was that first poem, and I had written it एक दोस्त के लिए जिसमें एक इवेंट हो रहा था जहाँ पर मदर्स डे का इवेंट था. तो हमने मम्मियों को ही बुलाया हुआ था कि आप अपनी पोएट्री, स्टोरी टेलिंग जो भी है शेयर करो. So not others were not supposed to perform. It was just for the mothers. But since the person organizing the event was my friend, he asked me कि काम करो Anamika, you write a poem on mothers, because they will be talking about different topics, not on mothers, and you dedicate a piece to them, and maybe we can keep it towards the end of the evening or something. And I was like, I have never written a poem or performed, so it was the first experience. तो मैं टालती गई, and then event के एक दिन पहले जब उसने पूछा कि कुछ लिखा है क्या, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं. तो मैंने 15-20 मिनट में, मेरी मम्मी भी मेरे साथ थी, तो मैं उनको देख रही थी और मेरे दिमाग में कुछ चीजें चलने लग गई और मैंने पोएम लिखी. शाम आई, सारी मदर्स ने परफॉर्म किया और हम आउट ऑफ टाइम थे. मतलब ऐसा हो गया कि 10:30-11 कुछ हो गए थे और मदर्स अभी हैं जिनको परफॉर्म करना है, तो मेरी बारी आना मुश्किल थी. तो मेरे दोस्त ने आके बोला कि यार अनामिका शायद ही तेरी परफॉर्मेंस हो पाएगी, एंड लेट्स लीव इट. एंड आई वाज वेरी ग्लैड, बिकॉज मैं इतनी डरी हुई थी कि मुझे लगा चलो पीछा छूटा, इतनी नर्वस थी कि चलो परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा.
But what happened is after each and every mother had performed, एक folk performance था. तो वो folk performance अपने इंस्ट्रूमेंट सही कर रहे थे. वो सेटअप करते थे स्टेज को, कोई तबला सही कर रहा था, कोई अपना सुर सही कर रहा था, माइक लगा रहे थे, सब हो रहा था. तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था. फिर मेरे दोस्त ने आके बोला कि अनामिका यही टाइम है, परफॉर्म कर दो. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसे बैकग्राउंड में सब चल रहा है और ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा. बट मैंने सोचा चलो ठीक है. मेरे चारों तरफ जो दोस्त थे, मेरे भैया थे, तरुण था, उन सबने पुश किया तो मैं चली गई स्टेज पे. तो अगर आप वो परफॉर्मेंस देखोगे तो बैकग्राउंड में वो सब चल रहा है, लोग अपना वो सब ठीक कर रहे थे या स्टेज सजा रहे हैं. और मेरे हाथ का पन्ना कांप रहा है बिकॉज मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस है. एंड दैट पोएम वेंट ऑन टू बिकम वायरल. लाइक इट रीच्ड द काइंड ऑफ पीपल आई नेवर थॉट इट वुड रीच. Millions of views. I started receiving calls and messages from random people, someone from Pakistan, someone from US, someone from Nepal, the kind of regions that people were, watching that poem and reaching out to me. एक आरजे था पाकिस्तान में, वो उसने मुझे वॉइस नोट भेजा फेसबुक पे appreciating the poem, and I was like कि ये जो ऐसे ही हो गया, जो ऐसे ही मैंने 15 मिनट में लिखा, ऐसे ही बैकग्राउंड स्टेज जब सज रहा था तब आके परफॉर्म किया, it became something. So I realized that it doesn't matter. Whenever you get the opportunity to say something, don't think about कैसे perform कर रहे हो, कहाँ perform कर रहे हो, just go for it. If your heart is like really truthful about what you're going to say, it will reach people across. And I experienced that day. And हम आज भी हंसते हैं उस बात को लेकर भी, कैसे मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं सुनाना, चलो ठीक कोई बात नहीं, टाइम नहीं है कोई बात नहीं. And then that poem was the reason that I'm a poet today. Otherwise I would have never continued that journey. Pen I would call just बातों की स्याही. So very generic, समय का पहिया or something. या टिक टिक का शो, कंप्यूटर, आधुनिकता की दौड़, एयर कंडीशनर, अरे ठंडी बात. One thing that I keep looking at or seeing is that there is never a solution to anything by getting into a complaint mode. Like it's very easy to get into it. हमारे पास है ना reasons है. As women we have reasons to complain about something. But it never works that way. It always works as not complaining about it, but really being an example to how you can do something differently so that it gets solved. And that is how you can set examples for others. And many poets or many people who get into this idea of feminism or talk about it, they talk from a perspective of anger instead of talking from a perspective of discussing things. कि हाँ चलो आप अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूँ. Instead, they will get defensive or offensive or in that space. And I have tried all of it, frankly. मैंने ये सब किया होगा, तो मुझे पता it doesn't work that. Instead, just be in a listening space. Try to understand their perspective, and then you will know how to answer it in a very calm and poised manner. And choose a way of answering, either through actions or through your words, but not through anger or not through defensive kind of a thing. I have male friends and partners and my relatives around who now are all ears to listen to your side of the story, and it comes from the way we have been portraying this gender equality issue in our films or through documentaries or through discussions like this. So, and this is the only way. बात करनी पड़ेगी. कोई gender equality का कोई डेट नहीं है कि इस डेट से things will get right. It happens just around you right now. तो कई लोगों को लगता है मंच पर खड़े होकर हम बात कर सकते हैं, पर घर में जब कुछ हो रहा होता है तो हम चुप लगा जाते हैं. या आपका दोस्त कुछ जोक बोलता है जो स्टीरियोटिपिकल है या ऑफेंसिव है, वहां हंस देते हो. आपको लगता है अरे माहौल खराब हो जाएगा अगर मैं नहीं हंसूंगी. So these are the spaces where you need to take actions and be aware what you're doing. And यही एक तरीका है कि धीरे-धीरे things will start getting better around us and people will start understanding what you're talking about. छोटी-छोटी जगह अपनी बात रखनी है. सही जगह पर अपनी बात बोलनी है, वहाँ टोकना है लोगों को जो गलत कर रहे हैं या जो आपको लगता है कि आप उनको अपना पर्सपेक्टिव उनके साथ शेयर कर सकते हैं. So these are the things you need to do to ensure that the road gets smoother and smoother as you move forward. So I think that's the only way we can, bias का जो भी टॉपिक है इसको धीरे-धीरे सॉल्व कर सकते हैं. घर से ही शुरू करनी होगी बराबरी हर सवाल की, हदें बनेंगी एक सी ही दोनों के ही ख्याल की. आजादी होगी दोनों को ही गिरने की फिर उठने की, कोई लिस्ट नहीं होगी अलग से तमीज के पैमानों की. एक दूसरे की कद्र करना सिखाएंगे हम बचपन से ही, कोशिशें करते रहेंगे हर खुली चोट को हम सीने की, हर खुली चोट को हम सीने की.